Hello everyone, very good evening to all of you. This is Ashwin Ramani, your Research Analyst at SAMCO Securities. I hope I'm audible and I hope you all are able to see my screen. If you all can give me a heads up in the chat box. अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है तो आप मुझे चैट बॉक्स पर हाय हेलो करके कमेंट कर सकते हो आ, ताकि मुझे पता चले कि आप इस लाइव सेशन पर प्रेजेंट हो. So I hope you all are able to see my screen guys, so you all can see Nifty's chart. और अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है, एकदम ऑडिबल है, विजिबल है, तो आप मुझे चैट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हो. ग्रेट. आई कैन सी. सो वी जस्ट वेट फॉर अ मिनट और सो. एक मिनट रुकते हैं बिकॉज आई सी दैट पीपल आर ज्वाइनिंग इन. एंड फिर शुरू करते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस. ओके ग्रेट. एसके जी इज योर. गुड इवनिंग एसके जी. December month nifty target please. Okay, we'll talk about that. शुभ शाह जी, आज का ये जो सेशन है हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं. अब तक क्या हुआ है वो देखते हैं. आने वाले सेशन में क्या हो सकता है वी टॉक अबाउट दैट. So it's not like a direct recommendation, but we talk about some key levels in Nifty and Bank Nifty. So ज़्यादातर ऐसे कोई टीचिंग मोड वाला नहीं होगा, बट इट्स जस्ट बेसिकली रिसर्च रिलेटेड. चल क्या रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, व्हाट आर द डेरिवेटिव डेटा इंडिकेटर्स इंडिकेटिंग, कैसे आप अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हो फॉर द अपकमिंग सेशन. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो ये हर वेनसडे को होता है. सो वी डू लाइक दिस, wherein we first analyze Nifty, we analyze Bank Nifty, and then we look at some key derivative data points. Then we look at the price charts. फिर वहाँ से हम देखते हैं कि क्या सपोर्ट बन सकता है, क्या रेजिस्टेंस बन सकता है, एक्सेट्रा. सतीश जी, दिसंबर का तो मुझे इनफैक्ट मुझे कल का मालूम नहीं क्या टारगेट हो सकता है, बट वील टॉक अबाउट सम की लेवल्स जो शायद आपको हेल्प करेगा आने वाले सेशन में. अमोल जी इज योर एज वेल. ग्रेट. तो चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर session today. So first we will look at the Nifty chart. Then हम लोग डेरिवेटिव डेटा इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे. फिर देन वी लुक एट बैंक निफ्टी. एंड देन आई अगर कोई क्वेश्चंस हो देन आई ऑल्सो टेक अप सम ऑफ द क्वेश्चंस एट द एंड. पहले सब डिटेल्स डिस्कस करने के बाद. ठीक है. सो हाउ हैज़ योर ट्रेडिंग बीन इन द लास्ट 2 days? अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी देख रहे हो तो वी हैव सीन सम प्रॉफिट बुकिंग. अगर आप लास्ट 2 दिन से देख रहे हो सो निफ्टी में कल हमें यहाँ पे एक लोअर क्लोज दिखाई दिया था. ये निफ्टी का डेली चार्ट है. सो निफ्टी मेड अ ऑल टाइम हाई ऑफ 26,277 एंड देन वी गॉट अ लोअर क्लोज येस्टरडे. आज एक यू कैन से देयर इज अ डोजी कैंडल फॉर्मेशन ऑन द डेली चार्ट हियर. So just looking at the last 2 days, guys, are you all still bullish on Nifty or have you all turned bearish on Nifty? If you all can let me know in the chat box. How many of you all feel कि शायद ये एक minor profit booking है and Nifty is probably going to start moving up again? और how many of you all feel कि ये जो आज जो 2 दिन से थोड़ा जो profit booking दिखाई दी है and that profit booking might continue for a few more sessions. So if you feel that Nifty is going to go up, you can just mention up. Or if you feel Nifty is going to go down, you can just comment down in the chat box here. Amol ji has turned bearish on Nifty. In fact, there are a couple of data points which were indicating that profit booking was around the corner. ये हमने आई थिंक पिछले लाइव सेशन में भी देखा था. आई थिंक वन इज योर लॉन्ग शॉट रेशियो, विच आई जस्ट शो यू कि लॉन्ग शॉट रेशियो का क्या स्टेटस है. And then there was this put call ratio divergence that was also visible just before the fall. So I'll take you to I'll take you through those indicators. What was the reason behind Nifty enduring profit booking here? But I think majorly it is because
I think if you all remember, uh, there was a specific news that was on China, I think last week back. So there was a new stimulus package that was announced by China here. So how many of you all were aware of that news, guys? So, so there were a lot of talks going on saying probably FPIs might take out some money from India and probably put that money in Chinese markets. So हो सकता है कि this profit booking might be short lived, but I think looking at the last two candles, अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट भी देखोगे तो एक यहाँ पे एक इवनिंग स्टार पैटर्न जैसे दिख रहा है. सो देयर इज वन ग्रीन कैंडल हियर, देयर इज अ स्मॉल रेड कैंडल एंड देयर इज वन अनदर रेड कैंडल हियर. बट जैसे हमने पास्ट में भी देखा है, जब जब ऐसे छोटा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आता है, वो निफ्टी उतना सस्टेन नहीं करता है. इवेंचुअली निफ्टी स्टार्ट्स मूविंग अप अगेन. एंड जिन्होंने भी ये पूरा रैली में यहाँ पे लॉन्ग जो बिल्डअप किया हुआ था, आई थिंक जो लास्ट 2 दिन से जो हमने देखा, दैट इज नथिंग बट लॉन्ग अनवाइंडिंग. सो जो लॉन्ग पोजिशंस थे दैट आर गेटिंग अनवाइंडेड. So it's just major routine profit booking is what I feel, and I think Nifty might start going up again. But what are the key levels? So we'll talk about those levels briefly. But before that, let me take you to the derivative data indicators first. How many of you all have been tracking the long short ratio, guys? जो हम लोग foreign portfolio investors का long short ratio देखते हैं, कि foreign portfolio investors का index futures में क्या activity है. तो हमने देखा था कि ये I think last week the ratio went above 70%. That means FPIs were holding more than 70% long positions in index futures, and there were like 30% short positions in index futures. Now let me show you one interesting data जो long short ratio में हमें दिखा था. So let me just zoom out for you. Now अगर आप देखोगे 27 सितंबर को the long short ratio touched 81.46%. Now 81.46% means what? It means FPIs जो कि आपके foreign portfolio investors है, they are holding nearly 81% long positions in index futures, and they are just holding 19% short positions in index futures. So इतना हाई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो ना, जब भी हमने आई थिंक पिछले लाइव सेशन में भी मैं आपको बता रहा था कि आप बुलिश साइड में रहना, बट आपके पोजीशंस आप इतने अग्रेसिवली ट्रेड मत करना. सो अगर आप जहाँ पे आप एक लॉट या दो लॉट या तीन लॉट या चार लॉट से ट्रेड कर रहे हो, सो प्रॉब्ली ट्रेड विथ ओनली वन लॉट और सो. डोंट बी टू अग्रेसिव in this markets, but at the same time don't miss out on the rally as well. Now if you look at the long short ratio had went until 81.46, and कल का डेटा ये बता रहा है कि जो आपका जो FPI long short ratio है, this is as on 30th September, because आज का डेटा आज शाम को ही आएगा. 30th September का long short ratio is 80.83%. That means थोड़ा सा long positions है वो unwind हुआ है FPIs के तरफ से भी. बिकॉज हमने पास्ट में देखा है कि जब जब आपका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इवन 70% के ऊपर चला जाता है, तब तब एक एक प्रॉफिट बुकिंग हमें मार्केट्स में दिखाई देती है. बट इज लॉन्ग शॉर्ट रेशियो द ओनली इंडिकेटर दैट यू नीड टू ट्रैक? नहीं. whenever the long short ratio has gone above 70, and at the same time जब भी आपका पुट कॉल रेशियो में जब भी एक डाइवर्जेंस दिखता है, तब तब आपका एक छोटा सा जो प्रॉफिट बुकिंग है, जो एक करेक्शन है, वो दिखाई देती है हमें मार्केट्स में. सो एक तो है, यू कैन सी द लॉन्ग शॉर्ट रेशियो ऑन 26 सितंबर इट वाज 79.89, यहाँ पे 81.46, एंड कल के डेटा से FPIs are holding around 80.83% long positions. So roughly around 80% long positions in index futures and only 20% short positions. I'll come to that part, बाबूजी. सो ये 80% लॉन्ग पोजिशंस है, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी FPIs के पास काफ़ी सारे लॉन्ग पोजिशंस है इंडेक्स फ्यूचर्स में. और इतने सारे लॉन्ग पोजिशंस का होना का ये एक संकेत हो सकता है कि कभी ना कभी ये लॉन्ग पोजिशंस को ये अनवाइंड करेंगे, और जब ये लॉन्ग पोजिशंस को अनवाइंड करेंगे, हमें एक प्रॉफिट बुकिंग के थ्रू एक प्राइस नीचे जाते हुए नज़र आ सकती है. और शायद हमें यही लास्ट 2 दिन से यही देखने मिला है. तो जितने लोग ने अपने लॉन्ग पोजीशंस बना के रखे थे, they are just booking profits in their long positions, and that is the reason for this fall here. I don't think apart from that there is any major reason to worry here. I think it's routine profit booking, and there are high chances that Nifty शायद एक फिर से ऊपर जा सकता है. So ये था आपका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो. नाउ लेट मी टॉक अबाउट पुट कॉल रेशियो योर. सो लेट मी जस्ट शो यू वन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन.
on the put call ratio chart. So this is so I've just gone to this Opstra website, opstra.define और Opstra के वेबसाइट में जाके यहाँ पे मैंने निफ्टी टाइप किया है एंड आई हैव सेलेक्टेड पीसीआर एंड यहाँ पे मैंने पीसीआर का लास्ट 3 मंथ्स का रेंज सेलेक्ट किया है. नाउ आई वांट एवरीवन टू फोकस हियर. यहाँ पे आप देख सकते हो. So this was around 19th of September guys. आप देख रहे हो 19 सितंबर से the price was continuously moving up and it went until 26277 levels हमने देखा था वहाँ पे. ये तो फ्यूचर्स का चार्ट है. बट अगर आप देख रहे हो प्राइस वॉज मूविंग नॉर्थ बट एट द सेम टाइम सी व्हाट द पीसीआर वॉज हाउ पीसीआर वॉज मूविंग योर. पीसीआर आपका 1.5 1.5 से 1.4 1.28 1.25 1.13 एंड 1.12. So here you can see there was a clear divergence that was visible between the price chart and the PCR chart here, जहाँ पे आपका प्राइस ऊपर जा रहा है एंड एट द सेम टाइम आपका जो पीसीआर है वो ऊपर नहीं जा रहा है. यूजली पीसीआर एंड प्राइस दे बोथ मूव इन द सेम डायरेक्शन. बट जब हम देखते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है बट पीसीआर ऊपर नहीं जा रहा है, भले वो दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है एंड एट द सेम टाइम जब आपका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो एक पीक टच करके वहाँ से इफ एफपीआई स्टार्ट ऑफलोडिंग देयर लॉन्ग पोजीशंस, तब हमने एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग देखा है. और हमने शायद ये जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ था निफ्टी में फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज, आई थिंक द मेजर रीजन फॉर दिस इज एफपीआई स्क्वेयरिंग ऑफ देयर लॉन्ग पोजीशंस एंड ये जो पीसीआर में जो डाइवर्जेंस विजिबल था मे बी दैट कैन बी वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर दिस फॉल ईयर. But again, this fall might be short-lived. I don't think this fall is going to continue. That is how I am looking at Nifty. हो सकता है it's better to find out where the next support is for Nifty and look for some good trading opportunities on the long side, but not on the short side here. So these were like couple of interesting observations. One is the long short ratio जो कभी 80% के उतना I think last year around 2023 के आसपास if I remember it had gone above 80%. Post that I've always seen long short ratio peaking out near about 70-75% और वहाँ से नीचे आ जाता है. Surprisingly ये time it has gone until 80-81%. कल जाके वो 80% हुआ है. But at the same time there was PCR divergence as well. सो आई थिंक ये रूटीन आई थिंक करेक्शन है, नथिंग मच टू वरी अबाउट. इससे ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट दैट इन दिस मार्केट फाइंड आउट वेयर द नेक्स्ट गुड सपोर्ट इज एंड आई थिंक दैट इज वेयर योर नेक्स्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी विल लाई. I'll talk about that, Babuji. So this is your long short ratio and your put call ratio. Now let us talk about India VIX. अगर आप India VIX देखोगे आज almost 6% से गिरा है. So whenever so volatility has cooled down a bit. So whenever volatility cools down, it is a good sign for the bulls. So जब आपका volatility कम होता है, so basically it gives comfort to the bulls here. I think apart from 25th September जहाँ पे काफ़ी volatile था, apart from that if you look at last 4 days, even on the day when Nifty fell almost nearly 1.5%, यहाँ पे आपका 6% बढ़ा था कल और आज नियरली 6.2% यहाँ पे गिर गया है. सो नथिंग मच टू वरी ऑन दी वॉलेटिलिटी फ्रंट एज वेल. एंड लास्ट में अगर आप ओपन इंटरेस्ट की भी मैं बात करता हूँ कि टोटल ओपन इंटरेस्ट का क्या पिक्चर है. सो अभी हमने रिसेंटली देखा था कि सितंबर का सीरीज का रोल ओवर था और तभी हमने देखा था कि द मोर लॉन्ग्स हैव बीन एडेड अप टू द अक्टूबर सीरीज. So we started the October series with 1 crore 71 lakh shares. तभी प्राइस था 26,216 और ये 30th सितंबर को ये 1 crore 71 लाख शेयर से गिर गया 1 crore 61 लाख शेयर्स. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो 1 crore 71 लाख शेयर से गिर गया है 1 crore 61 lakh shares. And that means there's almost nearly 6% fall in the open interest. And at the same time आपका प्राइस 26,216 से गिर गया 25,811. दैट मीन्स प्राइस हैज फॉलन नियरली 1.55%. ये कल के डेटा के हिसाब से आप देख रहे हो आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी गिर गया है और आपका जो प्राइस है वो भी गिर गया है. सो वेन एवर ओपन इंटरेस्ट फॉल्स एंड द प्राइस फॉल्स, दैट इज अ क्लियर केस ऑफ लॉन्ग अनवाइंडिंग. सो दिस इज नॉट, ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे नए शॉर्ट पोजिशंस बिल्ड हो रहे हैं. ये दिस इज अ केस वेयर जो जितने भी लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड हुए थे और जितना हाई चला गया था निफ्टी, बस एक रूटीन प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है. पीपल आर जस्ट अनवाइंडिंग देयर लॉन्ग पोजीशंस.
तो ये लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड करने के बाद एट सम पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी फ्रेश एडिशन ओपन इंटरेस्ट में, तो वो देखना पड़ेगा ये फ्रेश एडिशन हायर साइड पे है कि ये लोअर साइड पर है। हायर साइड पे होगा तो आपको लॉन्ग बिल्डअप दिखेगा, लोअर साइड पे होगा तो आपका शॉर्ट बिल्डअप दिखेगा, बट एज ऑफ नाउ देयर इज लॉन्ग अनवाइंडिंग दैट इज गोइंग ऑन इन निफ्टी एंड दैट्स ओनली अ रूटीन करेक्शन ईयर, इट्स नॉट ऐसा नहीं कि आप टोटली बेरिश हो जाओ। Go with a cautious approach, still don't be very aggressive in the markets here, but ideally if you would ask me I would say be on the long side rather than being on the short side here, because this is not the market to go short, this is your markets to be on the long side only. So जब गिरता है, find out your good support zone and try to find out your trading opportunities there. So these were about the key derivative data indicators. Now let us find out the key levels for Nifty. कल तो trading holiday है on account of गांधी जयंती. So आज बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का एक्सपायरी था. तो थर्सडे को आपका निफ्टी का एक्सपायरी है, दैट इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे. सो लेट अस फाइंड आउट कि आप निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान कर सकते हो, क्या आपका की लेवल्स हो सकता है. So this is the daily chart of Nifty. Let me open up the 5 minutes chart. Let me just zoom out for you. यहाँ पे मैंने की लेवल मार्क करके रखा था निफ्टी में. So I hope you all can see the 5 minutes chart of Nifty on my screen. If you all can give me a heads up in the chat box. आपको अगर मेरी निफ्टी की चार्ट दिख रही है 5 मिनट्स का. सो थर्सडे को वी हैव द वीकली एक्सपायरी फॉर निफ्टी. तो क्या लग रहा है आपको नाउ लुकिंग एट द डेरिवेटिव डेटा इंडिकेटर्स एंड लुकिंग एट द प्राइस चार्ट, व्हाट्स योर व्यू ऑन निफ्टी गाइस. मैंने यहाँ पे मेरा व्यू तो बता दिया हाउ आई एम लुकिंग एट निफ्टी, एंड आपके सामने मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा इंडिकेटर्स है वो भी मैंने यहाँ पे रख दी है. So how are you all looking at Nifty now? You still feel this might continue or you feel शायद ये profit booking खत्म होने के बाद we might see Nifty's price going up again. So if you all can let me know in the comment box guys before we start discussing Nifty's and Bank Nifty का price levels. So this is my Nifty's 5 minute chart. So you all can just comment चैट बॉक्स पे एक बार आप कमेंट कर सकते हो कि आप बुलिश साइड में हो या आप बेरिश साइड में हो. आई थिंक एसकेजी इज न्यूट्रल. ओके, फेयर इनफ. सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द की लेवल फॉर निफ्टी. तो यहाँ पे मैं निफ्टी का 5 मिनट्स चार्ट ओपन किया हूँ. सो वन की लेवल फॉर निफ्टी दैट जो आपको देखना चाहिए आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, जो कि आपका वीकली एक्सपायरी है थर्सडे को. So 25,900 is one level that you need to monitor guys, because I'll tell you why 25,900 is a very strong level. Because आप यहाँ पे देख रहे हो 24 सितंबर को निफ्टी ने 25,900 पे एक सपोर्ट लिया था. यहाँ पे फिर से 25,900 में एक सपोर्ट था. देन निफ्टी टुक अनदर सपोर्ट अगेंस्ट 25,900. देन यू सी निफ्टी ब्रोक दिस 25,900 लेवल, और आज का ट्रेडिंग सेशन आप देखोगे 1 अक्टूबर को, वो जो 25,900 लेवल जो प्रीवियसली एक सपोर्ट के तौर पर एक्ट कर रहा था, नाउ दिस लेवल इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. सो this is support 1, this is support 2, this is support 3. The support got broken here. The same support is now acting as a resistance. ये जो 25,900 है, so the next strong bullish move can only come if Nifty goes past the 25,900 mark. तो जब तक ये 25,900 mark के ऊपर नहीं जाता है निफ्टी, चांसेस आर दैट निफ्टी साइडवेज टू डाउन रह सकता है. बट अगर डाउन जाएगा तो भी कितना नीचे जा सकता है, अगर 20 बाई चांस इफ निफ्टी डजंट गो पास्ट 25,900, जो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है, सो योर वी कैन सी अराउंड 25,600 जोन. बिकॉज आप देखोगे 25,600 में एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे वो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, देन दैट सेम रेजिस्टेंस हैज नाउ एक्टेड एज अ सपोर्ट योर. सो 25,600 ऑन द लोअर साइड, बट अगर आप इमीडिएट लेवल्स पे देखोगे दैट इज 25,900. नाउ फॉर निफ्टी टू मूव हायर इट हैज टू गो अबाउट 25,900. बट अगर 25,600 भी ब्रेक होता है निफ्टी में, तो चांसेस आर दैट वी माइट सी दिस ये जो फॉल है, जो करंट
2 दिन से जो प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है, हो सकता है दैट कैन कंटिन्यू. But for that, don't aggressively go for shorts until 25,600 is taken out on the downside, because these are the key price action levels. Because यहाँ पे एक resistance था, ये support है, and around 25,900 पे 3 बार support लिया और यही support आज resistance के तौर पर act कर रहा था. So 25,900 is your immediate level. नीचे आता है तो भी wait until 25,600, वहां से देखो कुछ आपको एक अच्छा रिवर्सल मिल रहा है कि नहीं. बट अगर 25,600 भी ब्रेक होता है तो हो सकता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग और कंटिन्यू हो सकता है. सो लेट अस लुक एट द ऑप्शन चेन. तो ऑप्शन चेन में पहले निफ्टी की देख लेते हैं. यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं 26,000 में देर इज योर मैक्सिमम कॉल ओआई. मतलब आपका जो हाई सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वो 26,000 पे है. सो दिस 26,000 इज गोइंग टू एक्ट एज योर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. तो आप देख रहे हो जो 25,900 लेवल्स जो प्राइस एक्शन के हिसाब से एक रेजिस्टेंस है, उसको अगर तोड़ना भी है तो एटलीस्ट 26,000 के तो ऊपर जाना चाहिए फिर से निफ्टी को. सो 26,000 के ऊपर तब जाएगा जब कॉल राइटर्स यहाँ से एग्जिट करेंगे. अगर आप डाउन साइड में देख रहे हो विच इज योर 25,900, विच इज अवर रेजिस्टेंस एज पर प्राइस एक्शन. 25,900 में भी काफी ज्यादा कॉल राइटर्स है एज कंपेयर टू पुट राइटर्स. तो जब तक ये कॉल राइटर्स 25,900 से एग्जिट नहीं करते तब तक निफ्टी 25,900 के ऊपर जा नहीं सकता है. तो at some point of time call writers need to exit from 25,900. even if you look at 25,800, आज call writers ने वहाँ पे भी positions बनाने की कोशिश की है, but put writers were able to give them a tough fight. but अगर आप 25,600 देखोगे, that is going to act as your strong support. So ideally, which is that one level that you need to monitor for Thursday's session, because I don't know it is going to gap up होगा या gap down होगा या कुछ overnight news आने वाला है यहाँ से. बट आई थिंक एक की लेवल जो आपको ट्रैक करना है, अब लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे, बिकॉज वही हम लोग वो डेटा लेके वी कैन एक अज्यूम कर सकते हैं कि थर्सडे को क्या हो सकता है. आई थिंक दैट वन की लेवल दैट यू नीड टू मॉनिटर इन निफ्टी इज योर 25,900, बिकॉज 25,900 प्राइस के हिसाब से भी एक अच्छा रेजिस्टेंस है, और ऑप्शन चेन में भी अभी 25,900 में कॉल राइटर्स है. सो अगर निफ्टी 25,900 के ऊपर जाता है एंड एट द सेम टाइम कॉल राइटर्स भी एग्जिट करते हैं, हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से एक ऊपर की तरफ जाएगा. बट 25,900 के नीचे ही रहता है अगर प्राइस, और कॉल राइटर्स अपना पोजिशंस और अग्रेसिवली बिल्ड करते हैं 25,900 पे, then maybe chances are that fall can extend until 25,600. That is where its next support is. So these are the two key levels that you need to track in Nifty for the upcoming trading session, which is going to happen on Thursday. That is your weekly expiry. तो ये था आपका निफ्टी का एनालिसिस. नाउ लेट अस मूव टू बैंक निफ्टी एनालिसिस here. Now what is your view on bank nifty, guys? If you all can let me know in the chat box. I think bank nifty looks weaker compared to nifty, right? How many of you all agree? Or so you all can just let me know your views on bank nifty now, because हमने अभी निफ्टी के तो की लेवल्स देख लिए, विच इज 25,900, एंड उसका जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट है विच इज एट नियर अबाउट 25,600. तो यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको मैं कंबाइन कर रहा हूँ आपका ओपन इंटरेस्ट के सपोर्ट रेजिस्टेंस के through. So I'm just combining both your option chain analysis and your price chain analysis here. Now if we look at Bank Nifty यहाँ पे इवनिंग स्टार दिया था, इवनिंग स्टार के बाद अगेन यहाँ पे एक लोअर क्लोज मिला था. लोअर क्लोज इज नथिंग बट क्लोजिंग बिलो द प्रीवियस डेज लो, एंड आज ये कल का लो था विच इज 52,926. टुडे इट हैज क्लोज्ड एट 52,922. So we got one lower close, second lower close, third lower close. So we have got 3 consecutive lower close on the daily chart of Bank Nifty here. Now looking at the price chart, what is your view on Bank Nifty, guys? If you all can let me know in the chat box कि आपका व्यू बैंक निफ्टी पे क्या बन रहा है. आप बेरिश हो बैंक निफ्टी पर, या आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी मे बी शायद थर्सडे से या से ऊपर जा सकता है. अगेन आई थिंक इट्स अ रूटीन प्रॉफिट बुकिंग इन बैंक निफ्टी एज वेल, बिकॉज बैंक निफ्टी काफ़ी ऊपर चला गया था. आई थिंक इट had gone until 54,467, and there's probably just एक routine profit booking ही चल रहा है यहाँ पे. All the people who were
Long in Nifty and Bank Nifty are just booking profits and offloading their positions here. I think that is what is going on in Nifty and Bank Nifty both. But if I have to ask you your view on Bank Nifty, guys, if you all can let me know in the chat box before we go to the 5 minutes chart and look at the key levels for Bank Nifty as well. Because Deepak ji is bearish on Bank Nifty. Interesting, super. What about others, guys? If you all can let me know. Okay. Okay. So one key level that जो आपको बैंक निफ्टी में ट्रैक करना है, सो आई विल टॉक अबाउट दैट. सो लेट मी जस्ट ज़ूम आउट फॉर यू. सो आप ये यहाँ पे देख रहे हो, देर इज दिस 53,100 लेवल इन बैंक निफ्टी. यहाँ पे 53,100 से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागा था. यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट लिया था, यर द सपोर्ट गॉट ब्रोकन एंड आज की आप सेशन में देखोगे 53,100. आई थिंक ये फर्स्ट कैंडल में जो फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल है इसके ऊपर क्लोज किया था, बट देन इवेंचुअली टर्न्ड आउट टू बी अ फेक ब्रेकआउट एंड द होल डे बैंक निफ्टी ट्रेडेड इन अ रेंज योर एकदम साइडवेज मूवमेंट था. सो आई थिंक दिस 53,100 लेवल, बिकॉज ये लेवल दो बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था एंड दैट सेम लेवल एक्टेड एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हियर. And even if I look at the option chain data for Bank Nifty, let me go to 9th October expiry and let me look at 53,000. This is 53,100. So I think you can see the maximum activity जो यहाँ पे हो रहा है बैंक निफ्टी में, that is near about your 53,000 zones. वहाँ पे एकदम fierce battle चल रहा है between the call writers and the put writers. But more than 53,000, I would say the immediate strike price that you need to track in Bank Nifty is your 53,100 levels. ओनली बिकॉज ये जो 53,100 है ये सपोर्ट था, अगेन यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है एंड आई थिंक बैंक निफ्टी हैज फेल्ड टू क्लोज अबाउ 53,100 ईयर. तो अभी के हिसाब से तो यू नो देर इज स्टिल गुड बैटल गोइंग ऑन बिटवीन कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स एट 53,100. तो आपको ये देखना पड़ेगा, अगर 53,100 में कॉल राइटर्स अपना पोजिशन और स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी करंट लेवल से नीचे जाए. बट अगर कॉल राइटर्स अपना पोजीशंस एग्जिट करते हैं 53,100 से, तो हो सकता है ये 53,000 में भी ये पुट राइटर्स ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक सपोर्ट लेके यहाँ पे आपका सपोर्ट बनेगा 53,000 से 53,100 एंड द प्राइस हायर चांसेस आर दैट द प्राइस कैन मूव अप फ्रॉम योर. So I think that one key level that you need to monitor in Bank Nifty is 53,100. In case if 53,100 jata hai, so the next support here is, so you can see there are multiple supports for Bank Nifty near about 52,600 here. So 52,600 is going to be your support for Bank Nifty, whereas 53,100 is going to be your immediate level that you need to track it. Similarly Nifty में हमने देखा था 25,900. अगर वो 25,900 में रेजिस्टेंस बनता है तो उसका जो इमीडिएट सपोर्ट है दैट विल बी 25,600 यूर. बट इफ आई हैव टू गिव यू वन लेवल ईच फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, निफ्टी में आप ट्रैक करना 25,900, बैंक निफ्टी में आप ट्रैक करना 53,100. सो दीज आर द टू की लेवल्स दैट यू हैव टू ट्रैक इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हियर. सो ये था आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस. सो आइडियली इफ आई हैव टू समराइज, जितने भी हमने डेरिवेटिव डेटा पॉइंट्स देखे, हमने ये प्राइस एक्शन भी देख लिया यहाँ पे, आई फील ये जो प्रॉफिट बुकिंग है दैट माइट बी शॉर्ट लिव्ड. हो सकता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक फिर से लॉन्ग पोजिशंस बनना स्टार्ट हो. अगर करेक्शन आता भी है तो आई डोंट सी वी आर गोइंग टू सी अ मेजर करेक्शन. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द बुल्स आर गोइंग टू मेक अ कम बैक. हमने आई थिंक काफ़ी टाइम से हम ये देखे आ रहे हैं कि जब जब एक छोटा सा करेक्शन आता है, the bulls become very active and they try to push nifty even higher. So I think the same thing might probably happen in nifty again. So keep a watch on that. But now let's say if we want to plan a strategy in nifty, is there anyone who would want to volunteer here? If you all can let me know in the chat box. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, so we have this our flagship feature which is options bro.
So how many of you all have tried options, bro, guys? If you all can let me know in the chat box. How many of you all have logged into your Samco's web platform or your mobile app and have tried out options, bro, guys? So यहाँ पे अगर I think SKG is I think SKG knows about option, bro. What about Deepak ji, Amol ji, and others? How many of you all have tried options, bro, guys? तो अगर आप सैमको यूज़र है तो आई थिंक आपको ऑप्शंस ब्रो के बारे में ज़रूर मालूम होगा. सो इफ़ यू ऑल कैन लेट मी नो. या श्योर तेजस जी, आई कैन डू दैट. Would you like to volunteer, Tejas ji, for this? So great. So Tejas ji, you tell me. I think Amol ji knows about options, bro. I think since Tejas ji is due for options, bro. Uh, so I think let Tejas ji volunteer for this. सो तेजस जी आप तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने मेरे सैमको अकाउंट में लॉगिन कर लिया है. सो जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ, सो दिस इज माय वेब प्लेटफॉर्म. तो जैसे मैं लॉगिन करता हूँ मुझे डैशबोर्ड में यहाँ पे ऑप्शंस ब्रो दिखता है. सो योर यू कैन फाइंड आउट स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट. सो योर आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, बैंक निफ्टी में कर सकते हो, फिन निफ्टी में कर सकते हो, एंड यू कैन ट्रेड इन स्टॉक्स एज वेल. So let's say you have an option to trade between Nifty and Bank Nifty, Tejas ji. Which one would you prefer? Would you prefer trading in Nifty or would you prefer trading in Bank Nifty for now? So there are three inputs जो हमें देना पड़ता है यहाँ पे. आपको सबसे पहले सिंबल देना पड़ता है, आपको कौन सा एक्सपायरी के लिए चाहिए वो सेलेक्ट करना पड़ता है, एंड देन आपको यहाँ पे आपका व्यू बताना पड़ता है कि आपका बुलिश व्यू है या बेरिश व्यू है या न्यूट्रल व्यू है या वॉलेटाइल व्यू है. सो लेट्स से तेजस जी यू वांट टू ट्रेड इन निफ्टी, तो यहाँ पे आपने निफ्टी डाल दिया. ये तो मान लो 3 अक्टूबर का एक्सपायरी. अच्छा तेजस जी सेइंग बैंक निफ्टी. ओके ग्रेट. सो आई विल सेलेक्ट बैंक निफ्टी फॉर यू तेजस जी. क्योंकि आज का एक्सपायरी हो गया है तो चलो लेट्स गो फॉर 9 अक्टूबर एक्सपायरी. कैन आई सेलेक्ट 9 अक्टूबर एक्सपायरी तेजस जी? यू कैन लेट मी नो. बिकॉज एनी वे वी कैन ट्रेड 1 अक्टूबर एक्सपायरी नाउ. तो जो आने वाला एक्सपायरी है विच इज योर नेक्स्ट वेनेसडे, so your next Wednesday is going to be your 9th October expiry. And what is your view on Bank Nifty, Tejas ji? क्या आप bullish हो Bank Nifty में, क्या आप bearish हो Bank Nifty में, क्या आप neutral हो Bank Nifty में, या क्या आप volatile हो? See the most important part of option strategies, आपका व्यू सही होना चाहिए. बट अगर आपका व्यू गलत भी हो, जो कि हो सकता है, उसमें जो आपका लॉस है वो कम हो. नो नहीं, algo trading is not available, Amol ji, but with the help of one click you can place orders with the help of options, bro. So it's not like we have some predefined strategies जो आपको algo कर सकता है. So that is not available here. So Tejas ji, what is your view on Bank Nifty? Bullish, bearish, neutral or volatile? So bullish. Okay great. Tejas ji is saying bullish. तो यहाँ पे आपने सिंबल डाल दिया, आपने एक्सपायरी सेलेक्ट कर दिया 9 अक्टूबर, और आपने यहाँ पे व्यू डाल दिया बुलिश. तो अभी बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है 52,922. नाउ यू हैव टू गिव मी अ रेंज. तेजस जी आपको एक रेंज देना पड़ेगा कि आपको क्या लगता है कहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है इन द नेक्स्ट 1 वीक अंटिल 9 अक्टूबर. सो फ्रॉम 52,922, क्या लगता है अंदाज से, आपको क्या लगता है कहाँ तक बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकता है? इफ बुलिश देन यू हैव टू गिव मी अ रेंज कि डू यू थिंक 53,200 से लेके 53,300, वेयर डू यू सी बैंक निफ्टी मूविंग अप इन द नेक्स्ट 1 वीक? सो आप जो रेंज बोलोगे इसके हिसाब से आई विल जस्ट सेलेक्ट द रेंज योर एंड देन आई विल जस्ट क्लिक ऑन सबमिट. तो हमने यहाँ पे सिंबल सेलेक्ट कर दिया है, यहाँ पे हमने एक्सपायरी सेलेक्ट कर दिया है 53,050. ओके ग्रेट. सो कंजर्वेटिव है, सो आई विल जस्ट सेलेक्ट between 53,000 to 53,100. So that is the range that I have selected. 100 points का range है. So 53,000 से लेके 53,100 until 9th of October. Great. So here you have selected symbol, here you have selected expiry. यहाँ पे view दे दिया आपने और यहाँ पे आपने range भी select कर दिया. Now all I have to do is I have to click on submit. जैसे मैं सबमिट करूंगा द ऑप्शंस ब्रो इटसेल्फ विल स्कैन इट. मतलब वो जो एल्गोरिज्म जो चलता है पीछे, इट विल स्कैन एंड इट विल रेकमेंड 3 रेडीमेड स्ट्रेटजीज फॉर यू बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट. अभी आपको देखो यहाँ पे आपको 3 स्ट्रेटजीज मिल रहे हैं. वन इज एन अग्रेसिव स्ट्रेटजी,
एक आपका अग्रेसिव स्ट्रैटेजी दिख रहा है विच इज योर बैक स्प्रेड विथ कॉल्स, एक आपका मॉडरेट स्प्रेड स्ट्रैटेजी है विच इज इनवर्स किप स्ट्राइक बटरफ्लाई विथ कॉल्स, एंड आपका एक कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी है विच इज अ कॉलर बेस्ड स्ट्रैटेजी. Now, these are the three ready-made strategies based on your risk appetite. Now, what kind of a trader are you, Tejasji? Would you consider yourself as an aggressive trader or a moderate risk appetite trader हो, या आप एक conservative trader हो? So, what is your risk appetite? Because not everyone are aggressive, not everyone can be conservative. So, different traders will have different risk appetite. तो आपके रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से यू गॉट टू सेलेक्ट द स्ट्रैटेजी योर. सो कंजर्वेटिव मतलब एकदम लो रिस्क, ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते हो. अग्रेसिव मतलब आप थोड़ा रिस्क लेके ट्रेड करना पसंद करते हो. मॉडरेट स्ट्रैटेजी इज वेयर आप ज़्यादा रिस्क भी नहीं और एकदम कम रिस्क भी नहीं. सो व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रेडर आर यू, तेजस्वी? अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हो, मॉडरेट ट्रेडर हो, या आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, so then based on that you can just zero down on your strategies here. So what is your risk appetite, Tejas ji? If you can let me know in the chat box. Aggressive, moderate, conservative. Considering the recent trend, medium risk. Okay, so I'll go with the moderate one. So moderate with the one strategy that is recommended here is inverse skip strike butterfly with calls. और इसमें बोल रहा है आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 1910 है, आपका जो मैक्सिमम लॉस है दैट इज अराउंड 4072. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है दैट इज नॉट गुड योर, एंड आपका जो मार्जिन रिक्वायर्ड है दैट इज नियर अबाउट 32,000. बट लेट मी शो यू वन अदर मॉडिफिकेशन दैट यू कैन डू योर. ये recommended टैब के बाजू में देर इज ऑल स्ट्रेटजीज टैब. नाउ यू कैन फिल्टर आउट द स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स दैट यू गिव. तो सबसे पहले आपका जो रिस्क टाइप था वो मॉडरेट था, तो आपको ये बस एक मॉडरेट बेस्ड स्ट्रेटजीज दिखाएगा आपको. नाउ what is the minimum profit that you are expecting, Tejas ji? बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो मैक्स प्रॉफिट में द मिनिमम प्रॉफिट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 730 और मैक्सिमम जाता है ये 65585 तक. सो मान लो आप कोई स्ट्रेटेजी लगाते भी हो, सो व्हाट इज द minimum profit that you are expecting from this strategy here? So if you have to give me a range, so let's say you are expecting a minimum of let's say 5,000 rupees profit. आई थिंक मैं आपके लिए चलो मैं ही वॉलंटियर कर लेता हूँ यहाँ पे. आई थिंक आप सोचते हो कि अगर चलो मैं कोई स्ट्रैटेजी डालता हूँ तो एटलीस्ट एक ऐसा स्ट्रैटेजी दे दो, एटलीस्ट मिनिमम 5,000 का तो मैक्स प्रॉफिट बताए. बाय द वे 5,000 आपको मिलेगा ही ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. आई एम सेइंग द मिनिमम प्रॉफिट दैट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर स्ट्रैटेजी शुड बी एटलीस्ट 5,000 और अबव. ग्रेट, सो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ 5,000. नाउ सिमिलरली व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस दैट यू आर कंफर्टेबल टेकिंग इन तेजस? बिकॉज यहाँ पे देखो आपका मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 611 से लेके 68,000 का रेंज तक है. तो अगर आपने प्रॉफिट पकड़ा है 5,000, तो आप मैक्सिमम लॉस कितना आप बेयर कर सकते हो? नाउ दैट विल ऑल्सो डिपेंड फ्रॉम ट्रेडर टू ट्रेडर. तो मान लो अगर आपने 5,000 का मैक्स प्रॉफिट पकड़ा है तो कहना इससे उसके सामने आप ज्यादा से ज्यादा 3,000 का लॉस, उससे ज्यादा नहीं. सो आप करोगे तो देखोगे इसमें कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं. So then you need to modify it. So let's say we keep it at 4,000. Still you are not getting. अगर आप 2,500 रखोगे तो आपको कुछ strategy आएगा ही नहीं. So let's say here you need to keep 5,000 here. So let's say if we keep 1:1 risk to reward, still there is nothing here. So I think आपको मैं profit बढ़ा के देखता हूँ यहाँ पे. Let's say minimum is 7,000. Let's say I'll keep it 4,000 here. Nothing. If I keep it at 6,000, हाँ. So यहाँ पे जितने भी वो मॉडरेट बेस्ड स्ट्रेटजीज जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे जो आपका मैक्स लॉस है वो एटलीस्ट 5,000 के ऊपर है. सो हियर यू कैन सी नाउ यू हैव जीरो डाउन ऑन सम फ्यू ऑप्शंस. सो देयर इज, और आप बोलो व्हाट इज द कैपिटल दैट यू आर कंफर्टेबल विद. सो हम लोग ये भी कर सकते हैं. सो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ देर आर अराउंड 30,000 कैपिटल. सो लेट्स से द मैक्सिमम कैपिटल जो आप मिनिमम डाल सकते हो, मैक्सिमम डाल सकते हो. सो ओके फाइन, वी डोंट नीड टू हैव एनी फिल्टर आउट हियर. सो आपने यहाँ पे डाल दिया मैक्सिमम प्रॉफिट एटलीस्ट 7,000 का तो प्रॉफिट होना चाहिए, 7,000 एंड अबाउ.
एंड जो आपका मैक्सिमम लॉस है वो 6000 तक होना चाहिए, उससे ज्यादा होना नहीं चाहिए, बिकॉज उसके नीचे वाले कोई कॉम्बिनेशन मिल नहीं रहते यहाँ पे. सो दीज आर ऑल डन बाय द एल्गोरिदम इन द बैकग्राउंड. सो नाउ इफ यू सी, यू कैन सी ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है उसको भी आप रैंक कर सकते हो फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट. सो योर यू कैन सी ये जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है विच इज योर इनवर्स स्किप स्ट्राइक बटरफ्लाई विद कॉल्स, इसको हम लोग एनालाइज करते हैं. सो लेट मी क्लिक ऑन एनालाइज योर. So here you can see, so you selected moderate risk appetite. यहाँ पे it is recommending you to buy बैंक निफ्टी 53,700 कॉल, दो लॉट, और उसको आपको हेज करना है 53,300 कॉल सेल करके और एक 57,000 कॉल सेल करके. इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 82%, रिस्क टू रिवॉर्ड इज 1:7.75. मैक्सिमम प्रॉफिट इफ योर व्यू टर्न्स आउट टू बी राइट, यू कैन टेन टू गेन 43,000. बट अगर आपका व्यू गलत होता है, जो आपने बुलिश सोचा था बुलिश नहीं होगा, बेरिश हो गया, वो टाइम में आपको लॉस होगा एंड द लॉस इज रेस्ट्रिक्टेड टू 5,647. बट आपको प्रॉफिट कब होगा, जब बैंक निफ्टी आपके ये रेंज में क्लोज होगा 9 अक्टूबर तक. नाउ व्हाट इज दैट ब्रेक इवन रेंज? 53,315 on the downside and 54,084 on the upside here. अगर ये रेंज के बीच बैंक निफ्टी क्लोज होता है 9 अक्टूबर को, तब जाके आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा. बट अगर ये रेंज के, सॉरी, अगर 53,315 से 54,084 इसके बीच में होता है, दैट इज व्हेन यू विल हैव लॉस योर तेजस जी, विच इज योर 5647. बिकॉज योर यू कैन सी ये जो रेड पोर्शन है दैट इज योर लॉस एरिया. So if Bank Nifty closes between 53,315 and 54,084, you will see a loss. But अगर Bank Nifty ये range के नीचे close है, for example, let's say it goes below 53,315, you might see a profit. If it goes above 54,084, you might see a profit here. The only drawback to this strategy is अगर Bank Nifty ये range के अंदर close होता है, which is 53,315 to 54,084, that is when you will see a loss of 5,647. सो एंड यहाँ पे आपको कौन से स्ट्राइक्स खरीदने हैं, कौन से बेचने हैं, वो भी दिख जाता है. इसमें मार्जिन कितना लगेगा, रिक्वायर्ड मार्जिन इज अराउंड 33,463. एंड यू नो वंस यू आर ओके विद दिस स्ट्रेटजी, वंस यू फील ओके दिस इज द स्ट्रेटजी दैट यू वांट टू गो विद, यू कैन क्लिक द ट्रेड बटन हियर. आज जैसे आप ट्रेड करोगे, वन क्लिक से आपके जो मल्टीपल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे. तो आपके बाय ऑर्डर्स पहले जाएंगे, फिर आपके सेल ऑर्डर्स सेकंड जाएंगे. सो इन दैट ऑर्डर, सो दैट ऑर्डर प्लेसमेंट इज आल्सो टेकन केयर ऑफ. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज ऑप्शंस ब्रो टू योर एडवांटेज गाइस. सो अगर आपने इसके पहले नहीं देखा है, सिमिलरली ये देखो इनवर्स स्किप स्ट्राइक बटरफ्लाई विद कॉल्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस भी है. So there are different combinations with different risk to reward. So you can look for these combinations and find the one which you are comfortable with. So ये है तेजस जी आपका ऑप्शंस प्रो का डेमो. आई थिंक वंस यू लॉग इन टू दी ऐप, आप इसको और एक्सप्लोर कर सकते हो डिटेल में. सो फॉर द वंस हु आर नॉट अवेयर अबाउट ऑप्शंस प्रो, आई थिंक this would have served as a good a demo for you. All good, Tejas ji and others, guys. If you all can give me a heads up in the chat box. So this is how you all can use options, bro. So ये था आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस. So I think 25,900 for Nifty and 53,100 for Bank Nifty. Those are the two key levels that you need to keep in mind for the upcoming trading session. I log in today only. Great, Tejas ji, you can have a look. So if you have any questions, guys, do let me know in the chat box. कुछ questions है तो आप मुझे बता सकते हो. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. So we'll meet again next week, guys, because tomorrow is a trading holiday. So tomorrow the markets will be closed on account of Gandhi Jayanti. The markets will open on Thursday. Thursday is your Nifty's weekly expiry. Then we'll be again
Meeting next Wednesday, guys. Next Wednesday is, I think, 9th of October. Let me just check the date. Yeah, 9th of October at 4 o'clock is when the next live session would be. PCR ratio, how can work? So PCR is nothing but your put call ratio is nothing but the number of put writers by the call writer. So we take the open interest uh, on the put side, and then we divide that by the open interest on the call side. So usually if put call ratio अगर ज़्यादा है 1.5, 1.6, 1.7, so there are two types of PCR. One is your PCR open interest, one is your PCR volume. Open interest made is put writers by call writers. PCR volume made is nothing but put buyers by call buyers. तो अगर आप PCR OI देख रहे हो put writers by call writers, so if the ratio is on a higher side, then that means there is more put writing going on as compared to call writing. So if the ratio is below 0.5, 0.6, then that means there are more call writers than the put writers. It will be exactly opposite if you look at the PCR volume here. So ideally, how you should look at PCR is you need to compare that on a relative basis कि कल PCR क्या था और आज PCR कितना है. कि let's say yesterday the PCR was 1.3, today it has gone to 1.6. Then that means there were more put writers who have added positions as compared to call writers. और yesterday it was 1.3 और आज 1.0 हो गया. Then that means call writers थोड़े ज़्यादा है as compared to put writers. एंड एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू लुक एट डाइवर्जेंस जहाँ पे आपका प्राइस तो बढ़ रहा है बट आपका पीसीआर बढ़ नहीं रहा है जैसे हमने स्टार्ट ऑफ द सेशन में देखा था. तो जैसे आरएसआई डाइवर्जेंस है जहाँ पे प्राइस ऊपर जाता है आरएसआई नीचे जाता है. सिमिलरली when the price goes up the PCR also doesn't move in the same direction, it goes down. So those are the divergences that you can also look at. So जैसे हमने देखा था लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 81 जाके 80 हो गया और पीसीआर भी नीचे गिर रहा था. सो दैट कैन बी एन इंडिकेशन ऑफ थोड़ा एक सेलिंग प्रेशर हमें दिख सकता है मार्केट्स में. सो रिलेटिव बेसिस पे यू नीड टू लुक एट पीसीआर. आई थिंक मैंने यूट्यूब में एक नया वीडियो भी डाला है पीसीआर के ऊपर. सो यू कैन गो एंड चेक आउट हाउ टू यूज पीसीआर एज वेल. आई थिंक दैट विल बी a good learning for you. And how many of you all have been looking at the traders dashboard जो रोज आपके ऐप पर आता है और I think Telegram में भी आता है. If you have not joined our Telegram channel, and how many of you all are aware of our Samco's recommendation channel on WhatsApp, guys? So there's a daily update that goes on in our Samco's recommendation channel. So if you are a Samco user, I think you would be knowing about it. तो आई थिंक फॉर द वंस हु आर सैमको यूजर्स आपको ये ट्रेडर्स डैशबोर्ड पहले मिलता होगा. सो वी हैव डन सम चेंजेस इन द ट्रेडर्स डैशबोर्ड ईयर. सो एवरीडे मॉर्निंग यू विल कम टू नो अबाउट हर इंडाइसिस का क्या क्लोजिंग प्राइस है, वेयर इज द सपोर्ट, वेयर इज द रेजिस्टेंस, वेयर इज द 9 EMA एंड 21 EMA. देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे, व्हाट हैज हैपेंड इन ओपन इंटरेस्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है या लॉन्ग बिल्डअप हुआ है या शॉर्ट बिल्डअप हुआ है या शॉर्ट कवरिंग हुआ है. देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट एनएससी का एडवांस डिक्लाइन क्या है, व्हाट इज द लॉन्ग शॉर्ट रेशियो, इंडिया विक्स कितने पे क्लोज हुआ है. देन वी ऑल्सो mention about the FII and the DII activity in the cash segment. यहाँ पे आपको पूरा डेरिवेटिव इंडिकेटर्स मिल जाएगा. निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, व्हेन इज द एक्सपायरी, वेयर इज द मैक्स कॉल ओआई, वेयर इज द मैक्स पुट ओआई, व्हाट इज द पीसीआर एंड व्हाट इज द मैक्स पेन. नाउ मैक्स पेन इज द स्ट्राइक which has maximum open active contracts. तो आपको पूरा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा. Then you will also get a long build up stocks, you will also get short build up stocks. So this will serve as a a good information for you before you start your trading session for the day, guys. ठीक है, so do check out this traders dashboard as well. So that's all from my end, guys. I don't have WhatsApp, so okay, maybe you can be part of our Telegram channel. So there's Samco recommendations का एक WhatsApp channel exclusively for Samco users, wherein we keep posting a lot of updates throughout the day. Opening bell, mid market update, closing bell, then OI build up, then there are buzzing contracts, then there are volume gainers, along with the recommendations that comes throughout the day, guys. So that is only for the Samco user. So if you are a Samco user, you will I think you can just go to your Samco channel
Just go to updates and search for Samco recommendations channel. I think you'll get that. ठीक है, that's all from my end, guys. I hope it was a good session today. See you all next week on Wednesday at 4 o'clock. Until then, take care, stay safe, and have a profitable trading session ahead, guys. Bye, guys.